Hello everyone. Once again, I welcome you all. Today, I will address a very burning issue which is in the news for more than a week, and it is diverting our attention to rethink the situation faced by the unmarried women in social context, and that is law on abortion, especially law on abortion. What does it have the meaning for the unmarried woman? This is the entire thing which we will try to understand in today's session. I have divided into 6 parts. The first part is why this case is in news. तो जो हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स देख रही हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से महिलाओं के स्टेटस को एनहांस किया है. आइए हम समझेंगे, उसको लॉजिकली समझने का प्रयास करें और इसमें जो पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आई विल हाईलाइट, ट्राई टू ग्रैब दैट, बिकॉज इस न्यूज से मेंस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ह्यूमैनिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, एसए के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ना. तो इसका मल्टी डायमेंशनल यूज है इस टॉपिक का. सो प्लीज अटेंटिव रहिएगा और जो इन्फॉर्मेशंस बीच बीच में आपको दिए जाएंगे उसको नोट करने की कोशिश करिएगा. तो पहला सवाल था व्हाई दिस केस इज इन न्यूज. तो दोस्तों हम ये समझें कि दिस केस हैज रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस about the framework of the reproductive rights and recognizing female autonomy and agency. Actually थोड़ा सी बात को समझा जाए और जब आप पूरी स्क्रिप्ट को समझेंगे जो एक्शन के फॉर्म में घटित हुई है, द इंटायर इवेंट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. यू सी, a permanent resident of Manipur, 25 years old woman, she in Delhi High Court, the permission for termination of pregnancy of 23 weeks 5 days pregnancy she was having. अब मां बनना तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, इस हम सभी जानते हैं. तो कितना कठिन होता है, हाउ मच इट्स पेनफुल फॉर ए वुमेन जब उसको वो प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा सुख, एंड गॉड हैव ब्लेस्ड दैट वेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स टू ए वुमेन, और जब उस ब्लेसिंग्स को के खिलाफ जाकर उसको अपने मन को पत्थर बनाकर इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं. एनीवे, तो दैट मणिपुर वुमेन sought the Delhi High Court for the permission of termination of that pregnancy which she was having for 23 weeks 5 days, and she informed the court that she was having a partner, and they have established the consensual relationship, but later her partner denied to marry her. Now a social stigma in Indian society, though we have moved a lot ahead, we claim that we have become modernized, but still in Indian society, in the Indian social structure, there is still a stigma lying that, and that stigma was also grabbing that woman in his influence, that how it will be possible for her to raise up that child after giving birth, means
how it is possible for her as a single parent, as an unmarried woman, and this all was creating a fear in her mind and in her heart, and she informed that to the court. The High Court replied that we will not permit you to terminate this child. You give birth to that child, and later, after giving birth, you can give that child to somebody to adopt. So please don't kill that child. This was the High Court version on her application. Now she moved, after her application was declined in the High Court, she moved towards the Supreme Court, and she challenged the rule 3B. You can note it down, 3B of the Medical Termination Pregnancy Rule 2003, which allows only some categories of women to seek termination between 20 to 24 weeks. Fetus means this Act, 2003 Act, MTP Act, only permits in especially it's giving the permission, it's providing the permission to some few categories, to those women who are having the pregnancy between 20 to 24 weeks. So this was the challenge by that woman. Now, what are the existing laws on abortion? On the screen, you can see on the slides, section 312 of the Indian Penal Code 1860 criminalizes voluntarily causing miscarriages, even when it is with the woman's consent, except when the miscarriage is caused to save her life. This means, what does it mean? This means that a woman or anyone else, including the medical practitioner, doctor, could be prosecuted for an abortion. This was the first step, you can see in the section 312. Later in 1971, as you can see the information displayed before you in the slide, that the Medical Termination of Pregnancy Act was introduced to liberalize access to abortion, since the restrictive criminal provision was leading to women using unsafe and dangerous methods for termination of pregnancy. Now you see that the MTP Act allowed termination of pregnancy by a doctor or medical practitioner in two stages. First, for termination up to 12 weeks. There are two categories, try to understand this. For termination up to 12 weeks from conception, the opinion of one doctor is sufficient, it was required. But for pregnancies between 12 and 20 weeks old, the opinion of two doctors was required. So they would have to determine if the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health, or there is a substantial risk, that is, the child were born, it will suffer from any typical physical or mental abnormality as to be seriously handicapped. So this is the entire provision which have been categorized in two parts. First part is termination up to conception from 12 weeks and later 12 to 20 weeks. Okay. In 2021, Parliament amended. Now you try to understand the law, and it allowed for a termination under the opinion of one doctor of pregnancy up to 20 weeks. Means the earlier arrangements were having the limitation of the single doctor between conception to 12 weeks, that was extended till 20 weeks. And between 20 to 24 weeks pregnancy, the consultation for two doctors was recommended. It was suggested that it is required. Okay. So for the second category, means between 20 to 24 weeks, this is the second category. The rules were
defined in 7 categories who will be eligible for such type of termination. Now you can see before you, it has been displayed in the slide, that number 1, survivors of the sexual assault or rape or incest, all those cases. Number 2, minors. Number 3, change of marital status during the ongoing pregnancy, such as after conceiving, having any widowhoodness or any type of divorce took place. Number 4, women with physical disability, because if you see a major disability as per criteria laid down under the Right of Person with Disability Act 2016, this type of facility is provided to her. Next point, mentally ill women, including mental retardation. So this is also one category. Sixth, the fetal malformation that has the substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born, it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped. And last, women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the government. So you see in 2021, Parliament have amended this and provided 7 categories, which definitely had brought a fresh air and provided more space than it was earlier. So one thing more, in those cases, in cases involving rape, the law states that the anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman. You can see that in that case, the law permit the abortion between 20 to 24 weeks pregnancy. And High Court have also often been less stringent in deciding such cases. For example, if you see second week of the July, the Delhi High Court allow a minor rape victim to terminate a pregnancy of around 25 weeks. In January 2021, Delhi High Court have permitted a 16 years old rape victim to terminate her 26 weeks pregnancy. So these are the special situations which is directly related with the mental health of that victim or that woman or that girl. So this is the thing. These are the law, existing law. And this Manipur resident woman have challenged the Rule 3B of the Medical Termination Pregnancy Rule 2003, which allows only some categories of women in seek to termination between 20 to 24 weeks. So she have challenged this particular in the Supreme Court. Okay. Now, before discussing the gaps in law, as you can see behind me on the screen, let us know in brief that what was the response of the Supreme Court and what was the decision of the Supreme Court. You see, Supreme Court straight away said that the word partner, the amendment which took place in MTP Act in 2021, that has the word partner instead of husband. And there you see only one word changed the entire scenario, because the word partner instead of husband exhibiting the intention of law of the land to not confine it only to the marital relationship. When you talk about the partner, then you can't restrict till only one social status, and that is the social status of husband. So this was the one basic thing which became the base to give the decision by the Supreme Court. And the Supreme Court also said that the petitioner cannot be denied to the benefit of law on the ground that she was unmarried, and that doing so would be contrary to the object and spirit of the legislation. This is the thing which you should understand.
व्हाट वाज द बेस, एंड दैट वाज, यू शुड रिमेंबर, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, केस को समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, आपको समझना है कि 2021 में जो संशोधन हुआ उसमें पति शब्द का प्रयोग की जगह पार्टनर शब्द का प्रयोग है, और पार्टनर शब्द से अर्थ थोड़ा विस्तृत हो जाता है, उसका फलक विस्तारित हो जाता है, और पति एक विशिष्ट परिस्थिति को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एनी पर्टिकुलर स्टेटस, सोशल स्टेटस। ठीक है, तो ये एक अंतर आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या आधार था, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया। ठीक है, तो अब आइए इस बात को समझा जाए कि गैप्स कहां पर थे, और वो उस गैप्स को किस तरीके से हमें समझना है। एक रिपोर्ट आई है, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। लीगल बैरियर्स टू द असेसिंग सेफ अबॉर्शन सर्विसेज इन इंडिया, अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी 2021 में, एंड दिस स्टडी वाज डन बाय द सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंड नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया इन इंडिया बेंगलोर। ये दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इस स्टडी को किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, और यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडियन सोशल स्ट्रक्चर आज भी जो है पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क के अंदर जो है इस तरह के संशोधनों का विरोध करता है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स रिवील्स दिस स्टडी, दिस इज अ स्मॉल पार्ट which I have taken from this study. Parliamentary debates reveals that the lawmakers, means who are the lawmakers? Parliament, the members of the parliament, were concerned that a liberal abortion law would promote sexual promiscuity among the women. एक तरह की सेक्सुअल अराजकता की स्थिति को पैदा कर देगा। ये कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए भी बहुत लिबरल एबॉर्शन लॉज नहीं होना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि मैं हमेशा सोशियोलॉजी के क्लासेस में भी कहता हूं कि मॉडर्न कहना और इन एक्शन, इसलिए प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वो कहा करते थे कि मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। कपड़ों से मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। आप में से तमाम लोग इस समय मॉडर्न कपड़े पहनकर, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, पहने होंगे। आप ये लेक्चर जब देख रहे हैं तो भी आप इस समय उन सारे परिधान को धारण किए होंगे, बट दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट मॉडर्नाइजेशन, अबाउट पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, अबाउट ग्लोबलाइजेशन, एंड nowadays about the post globalization. So in this entire scenario, try to understand what was the concern of the lawmakers कि sexual promiscuity among the women हो जाएगी, इसलिए बहुत लिबरल लॉ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसके आर्गुमेंट्स हैं दिस और दैट में। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक जो एनालिसिस है दैट फोकस दैट MTP Act is not legislation focused on women and their reproductive rights. मैंने शुरुआत में कहा कि this case has raised important questions about the framework of reproductive rights and recognizing female autonomy and agency. Definitely, एजुकेशन रेट फीमेल्स की बढ़ रही है, तो रिप्रोडक्टिव राइट्स काफी हद तक शिफ्ट हुए हैं। कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे पैदा करने हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, शादी के 4 साल बाद बच्चा पैदा करना है, काफी हद तक एजुकेशन ने एनहांस किया है न सिर्फ स्टेटस ऑफ द वुमेन को, बल्कि सोशल मोबिलिटी इस तरीके से हुई है दैट हैव एम्पावर्ड द वुमेन टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर फैमिली। हाउ मेनी चाइल्ड्स, बच्चा किस स्कूल में जाएगा, पहले पापा लोग जाते थे। आप में से देखिए तमाम लोग जो होंगे, इफ यू इवेल्युएट ऑनेस्टली, बताइए है कि नहीं है, आप में से तमाम लोग हैं ना। मैं आप लोग के समय में केवल फादर गए होंगे या दोनों गए होंगे, लेकिन अब चीजें उल्टी हो गई हैं। नाउ मदर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहां पर बच्चा एडमिशन लेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा,
कौन सा ट्यूटर होगा? पहले तो ट्यूटर जो आता है घर पर पढ़ाने के लिए, उसका इंटरव्यू मम्मियाँ लेती हैं, घर की जो वुमेन्स होती हैं वो लेती हैं। उसका डिसाइड होता है कि ये ट्यूटर हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। सो दिस है डेफिनेटली द एजुकेशन हैव एनहांस द एम्पावरमेंट एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरा एनालिसिस है, दैट इज ऑफ द व्यू दैट एमटीपी एक्ट इज नॉट अ लेजिस्लेशन विच इज फोकसिंग ऑन द वुमेन and their reproductive rights. Rather, it is a law that draws red line. Red line. अब ये रेड लाइन किसके लिए है? That doctors, medical practitioners cannot cross that while performing abortions. उनके लिए एक रेड लाइन खींची गई है, उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है, ताकि वो एबॉर्शन के लिए उस सीमा रेखा का उल्लंघन न कर सके। तो इस बात को समझिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कर देखते हैं कि आगे इसका भविष्य क्या है, इसमें दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि एज पर द एमटीपी एक्ट ऑल वुमेन आर अलाउड टू गेट ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स। ये तो ओपन एंडली हो गया कि 20 वीक के पहले, 20 वीक्स के पहले अब कोई बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। But only certain categories of women are allowed to have an abortion between 20 to 24, 20 से 24 हफ्तों के बीच कुछ कैटेगरीज जिसकी चर्चा मैंने, जो स्लाइड्स आपको डिस्प्ले की गई हैं स्क्रीन पर, उसमें आपने देखा होगा 7 कैटेगरीज थी। सर्वाइवर ऑफ रेप्स, माइनर्स एंड मैरिड वुमेन whose रिलेशनशिप स्टेटस हैव अल्टर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनको स्पेशल प्रिविलेज कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अभी मैंने आपको 2 केसेस एज अ केस स्टडी कोट किया है, एक रेप केस था और दूसरा जो है एक माइनर केस था, 16 ईयर ओल्ड रेप केस था, और उसकी 26 वीक्स की जो प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट करने का हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था। तो वो स्पेशल केसेस में इस तरीके से अंडर टेकन फॉर कंसिडरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑफ एक्सपेंडिंग दिस लॉ मीन्स? देखिए, एक्सपेंशन ऑफ दिस लॉ by giving such type of decision by the Supreme Court includes unmarried women as a part of MTP Act, है ना, और उनके अधिकारों को बढ़ाया है, enhance the rights। क्यों? क्योंकि जो गैप था, अब गैप क्या था इसको समझिए और पूरा आपको केस और सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना समझ में आ जाएगी कि इतनी लिबरल, इतने मानवीय दृष्टि से, इतने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कंसिडर किया। बिकॉज before the decision released by the Supreme Court, the existing law recognizes change in circumstances of the relationship status between a pregnant woman and her spouse in the case of divorce and widowhood, but it does not envisage the situation of unmarried women। यानी कुछ लोग दायरे में थे और कुछ इंपॉर्टेंट लोग उस लक्ष्मण रेखा के बाहर छूट गए थे। उनको छूटे हुए लोगों को उस रेखा के अंदर ले आया, उस लीगल लक्ष्मण रेखा के अंदर ले आया, उस वैधानिक लक्ष्मण रेखा के अंदर ले आया। सो ट्राई टू ग्रैप दिस। So this was the gap which is more or less filled by this decision given by the Supreme Court। ठीक है, तो ये एक चीज है। और फाइनली एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करिए, मान लीजिए मेंस में आ जाता है कि इवेल्युएशन करिए कैसे है, तो अगर इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क में इस पूरे एबॉर्शन लॉ को अगर आप देखिए, व्हेन यू एनालाइज दिस इंटायर एबॉर्शन लॉ या एमटीपी एक्ट टिल दिस डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, so one thing is clear, that still in India, when you do the comparison between the Indian laws and other European or US law, then you can say that, especially in comparison to many countries, including the US, where the abortion restrictions are severely restricted, both historically and in the present time। अमेरिका में देखिए आप कितना रिस्ट्रिक्शन है एबॉर्शन पर, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी था और आज भी है, और कड़ा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ऐसे में भारतीय परिदृश्य में, इन इंडियन सिनेरियो,
दिस लीगल प्रोविजंस। ये ठीक है, अमेंडमेंट्स जरूरी होते हैं, होने चाहिए, और ये अमेंडमेंट्स जो खामियां रहती हैं, जो लैक्स रहते हैं, जो विलंबनाएं रहती हैं पुराने नियमों में, उनकी भरपाई करने का काम करती रही हैं, कर रही हैं और करती रहेंगी, ऐसी हमें उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दैट nutshell में I tried from my end to discuss this very sensitive, very important social issue. Thank you.